Hey everyone, welcome back to my channel, and if you're new here then hello, I'm Urmi. Welcome to my channel. So in today's video I will show you how to make your eyes look bigger. This is especially for those who have hooded eyes like me. So if you're interested then please continue watching. First, with the help of concealer, I am going to prime my lid, and I am going to use concealer from Wet n Wild. पहले मैं एक कंसीलर लेके मेरी लिड को प्राइम करूँगी। For this look, I am going to use this eyeshadow palette from Wet n Wild, and this is in the variant Rose in the Air. For my transition shade, I am going to take this cool tone brown and I will blend it above crease. मेरे ट्रांजिशन शेड के लिए मैं ये कूल टोन ब्राउन कलर सिलेक्ट करूँगी और फिर मैं अपनी क्रीज के ऊपर वाले एरिया में इसे ब्लेंड करूँगी। Next up, I am going to pick this dark brown, but I will mix it with previous color and then I will apply it slightly below my transition shade. और अब मैं ये डार्क ब्राउन शेड लूँगी, लेकिन उसे मैं पहले वाले ब्राउन के साथ मिक्स करके मैंने जहाँ पे ट्रांजिशन शेड लगाया था उससे थोड़ा सा नीचे लगाऊंगी। And now I am going to apply the dark brown in my outer V. और अब मैं वो डार्क ब्राउन को मेरे आउटर वी में अप्लाई करूँगी। And now I am going to cut my crease with the same concealer. As I have hooded eyes, I will bring my crease higher than my actual crease, otherwise it will not show up. और अब मैं कंसीलर लेके मेरी क्रीज को कट करूँगी, लेकिन मेरी जो एक्चुअल क्रीज है उससे थोड़ा सा हायर रखूँगी, क्योंकि मेरी आइज हुडेड है तो मैं अपनी एक्चुअल क्रीज से कट करती हूँ तो वो दिखाई नहीं देगा। Now I am going to blend the dark brown into concealer. और अब मैं वो डार्क ब्राउन शेड को कंसीलर में ब्लेंड करूँगी। Now for my lid, I am going to select this matte off-white shade. You can use any light shade you want. You can use matte, shimmer, whatever you want. अब मेरी लिड के लिए मैं ये ऑफ वाइट शेड सिलेक्ट करूँगी। आप कोई भी अपनी पसंद का लाइट शेड सिलेक्ट कर सकते हैं, शिमर, मैट, कोई भी। Now I am going to take the transition shade again and I am going to place it in between off-white and dark brown to create a gradient. अब मैं वो transition shade फिर से लेके dark brown और off-white को blend करूँगी। I have applied my mascara. Now I will take that dark brown and I will apply it only on the outer 2/3 of my lower lash line. मैं वो dark brown shade लेके उसे अपनी lower lash line के outer 2/3 part में apply करूँगी। Now this is totally optional step. I am going to apply the skin color Kohl pencil from Pack Cosmetics in my lower waterline. अब मैं ये skin color का Kohl pencil लेके उसे अपनी waterline में apply करूँगी। Now I am going to highlight my brow bone with that off-white shade. और अब मैं वो off-white shade लेके मेरे brow bone को highlight करूँगी। And with this shimmer shade I will highlight my inner corner. और ये shimmer shade लेके मैं अपने inner corner को highlight करूँगी। मैंने अपने फॉल्सिस लगा लिए हैं। आपको ऐसे फॉल्सिस सिलेक्ट करने हैं जो थोड़े से विस्पी हो, ताकि आप अपनी लिड देख सके। मैंने यहाँ पे आईलाइनर लगाया है, पर आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं क्योंकि विदाउट आईलाइनर आपकी आईज ज़्यादा बड़ी दिखेगी।
And that is the completed look. As you can see, my eye is looking much bigger than it actually is. If you find this video helpful, then press that like button, comment down below and share this video. And before you leave, make sure that you are a subscriber of my channel and hit that bell icon so that you will be notified every time I upload. You can follow me on Instagram. You will find the link in the description box below. I will see you in the next video. Till then, bye bye.